Hello students, myself Mr. Yogesh Akrekar from HDSM College Palghar welcomes you all in my YouTube video of subject Bookkeeping and Accountancy, chapter number 6, Dissolution of Partnership Firm. Students, in our last video, we have discussed about second method of dissolution of partnership firm. Second method of dissolution of partnership firm is called dissolution under insolvency situation. Now, our today's video, we are going to solve second method of dissolution, that is dissolution under insolvency situation. So today we are going to solve question number 8, page number 248, which is based on dissolution under insolvency situation. First of all, we will read the question. Sitaram, Gangaram and Rajaram sharing profits and losses in the ratio of 4:2:3. Three partners are given in this question. Sitaram, Gangaram and Rajaram, and their ratio is given 4:2:3. It means it is 4/9, 2/9 and 3/9. On 1st April 2019, they agreed to dissolve partnership. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. Now on 1st April 2019, they have decided to dissolve their business, or they have decided to close down their business. And here we have given their balance sheet as on 31st March 2019. So first of all, we will read the balance sheet and we will do the marking to the balance sheet. First we will see liability side of the balance sheet. Capital account of Sitaram, Gangaram, Rajaram. It will be transferred to partners capital account credit side. So here we will write cap CR. Next is reserve fund. Reserve fund will be transferred to partners capital account credit side. So here we will write cap CR. Next is profit and loss account. Now here we have given accumulated profit. Okay. So that balance of profit and loss account will be transferred to partners capital account credit side. Here we will write cap CR. Now here we have given three liabilities. First is loan from Tukaram. Now Tukaram is not a partner of the partnership firm. Tukaram हमारे partnership का partner नहीं है. He is an outsider. Okay. So as and when if we take loan from outsider, it will be outsider liability. Okay. And that's why we will show loan from Tukaram in realization account credit side. Okay. अगर आप पार्टनर से लोन लेते हो, लोन फ्रॉम पार्टनर कहाँ है? In such situation, we have to open partner's loan account. But if we take loan from outsider, then we will have to show that effect in realization account credit side. So here we will write RCR for loan from Tukaram. Then sundry creditors and bills payable, both are outsiders liability. Okay, so it will be transferred to realization account credit side. So for sundry creditors and bills payable, we will write realization account credit side. Now we will see asset side of the balance sheet. Building, machinery, furniture, investment, bill receivable, sundry debtor, stock, all these are sundry assets of a business, and that's why all these sundry assets will be transferred to realization account debit side. Okay, we will club all assets. सब asset को हम क्या करेंगे? Club करके कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. सो हियर वी विल राइट रियलाइजेशन डेबिट फॉर ऑल दीज सन्ड्री एसेट्स फ्रॉम बिल्डिंग टू स्टॉक. नाउ नेक्स्ट इज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. नाउ एज एंड व्हेन बोथ बैलेंसेस आर गिवन, अगर आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस दिया है, सो एट दैट टाइम वी हैव टू ओपन बैंक अकाउंट. आप कौन सा अकाउंट ओपन करोगे? बैंक अकाउंट ओपन करोगे. ओके, एंड cash in hand will be transferred to bank account debit side. Okay, so cash in hand कहाँ transfer करना है? बैंक अकाउंट के डेबिट में. So here we will write bank account debit side. Cash at bank, that bank balance will be transferred to bank account debit side. So here we will write bank account debit. Okay, now we will read adjustments one by one. The assets realize. Asset को हमने क्या किया? Realize किया, बेच दिया, सोल्ड किया. Okay, building, machinery, furniture,
investment, bill receivable and debtor. Now here we have realized all assets of a firm. Okay, सभी asset को हमने बेच दिया है. Then all liabilities were paid off. Okay, now after realization of asset we have paid all liabilities of the firm. firm की जितनी भी liabilities थी उसको हमने क्या किया, paid off कर दिया, उसकी हमने payment कर दी. The cost of realization was rupees 800. Okay, and after that we have paid realization expenses costing rupees 800. Okay, राजाराम becomes insolvent और राजाराम become bankrupt. राजाराम क्या हो गया, bankrupt हो गया. Bankrupt means insolvent हो गया. Now insolvent partner is that partner whose liabilities are more than its asset. Insolvent partner ऐसा partner होता है कि जिसकी liability business के asset से ज्यादा होती है, वो कंगाल हुआ होता है. Okay, so राजाराम become insolvent or bankrupt and rupees 1100 only was recovered from his estate. And after insolvency of Rajaram, firm has received or firm has recovered only 1100 rupees from the Rajaram. Okay, so realization account, partners capital account and bank account. Now this is a question of dissolution under insolvency situation. Okay, so in this question we are going to prepare realization account for 20 lines in first page. Okay, and in second page we will prepare partners capital account for 8 lines, and below that we will prepare bank account for 8 lines. Okay, and in next page, that is page number 3, we will prepare working notes. Okay, so let me start with solving this question. First of all we will do posting of balance sheet. Now liability side, Sitaram, Gangaram, Rajaram, capital account will be transferred to partners capital account credit side. So in capital account credit side we will write by balance brought down, Sitaram 65,000, Gangaram 45,000 and Rajaram 7,000. Okay, now next is reserve fund. Reserve fund will be transferred to partners capital account credit side. So in partners capital account credit side we will write by reserve fund account, now amount of reserve fund is 18,000. It will be distributed among all 3 partners, Sitaram, गंगाराम एंड राजाराम. तीनों को हम क्या करेंगे, रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विच इज 18,000 रुपीज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो रेशियो ऑफ ऑल 3 पार्टनर्स इज 4/9, 2/9 and 3/9. So it will be 8,000, 4,000 and 6,000. Okay, 8, 4 and 6. Now next is profit and loss account. Profit and loss account will be transferred to partners capital account credit side. So in partners capital account credit side we will write by profit oblique loss account. It's an accumulated profit. Okay, amount of profit and loss account is 5,400. So it will be distributed among Sitaram, Gangaram and Rajaram. 5,400 into 4/9, 5,400 into 2/9, 5,400 into 3/9. Okay, 2,400, 1,200
and 1,800. Okay. $2,400, 1,200 and 1,800. Now next is loan from Tukaram, sundry creditors and bills payable. These are outsider liabilities. Okay, and that's why it will be transferred to realization account credit side. So in realization account credit side, we will write by sundry liabilities. First is loan from Tukaram. Amount is 10,000. Then sundry creditors, 12,000 rupees, and bills payable, 4,600 rupees. Total is 26,600. Okay. Now we will do posting of asset side of the balance sheet. First we will record sundry assets. Sundry assets will be recorded in realization account debit side. So here we will write 2 sundry assets. First is building, 55,000. Machinery, 25,000. Furniture, 12,000. Investment, 15,000. Bill receivable, 3,500. Debtors, 21,000. And stock is 28,000. Total of realization account debit side is, total of sundry asset is 1,59,500. Okay. Now next is cash in hand, cash at bank. Okay. Here we have opened bank account. Okay. So cash at bank balance is given 2,000. Okay. So in bank account debit side we will write 2 balance brought down. Bank balance हमें brought down करना है. It is rupees 2,000. Now we have also given cash in hand. Okay. So as and when cash in hand and cash at bank account, cash at bank is given in asset side, we will have to open bank account. And first of all we have to write 2 balance brought down. Bank balance आपको पहले लिखना है. Okay. And in bank account debit side we will write 2 cash in hand. Amount of cash in hand is given 5,500. It is 5,500. Now we will solve all adjustments.
असेट्स रियलाइज, असेट को हमने क्या किया, रियलाइज किया, सोल्ड किया, बेच दिया। असेट को आप बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा। ओके, सो दैट इफेक्ट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ असेट वी विल शो इन रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, सो इन रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड वी विल राइट बाय बैंक अकाउंट। हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है, सो वी विल राइट बाय बैंक अकाउंट। फर्स्ट इज बिल्डिंग 46,750. Second, machinery 18,550. Third is furniture 9,600. Then investment 10,650. And bill receivable and debtors. Bill receivable and debtors. It is rupees 20,750. Total of realization of asset is 1,06,300. Now second effect of realization of asset, आपने asset को बेचा है, okay, so हमें पैसा मिलेगा, so that's why we are here we have recorded by bank account. Now second effect will be transferred to bank account debit side. Okay, so in bank account debit side we will write to realization account. One lakh 6,300. ओके, नेक्स्ट इज ऑल लाइबिलिटीज वेयर पेड ऑफ। हमने क्या कर दिया, असेट को बेचने के बाद हमें पैसा मिला है। ओके, एंड फ्रॉम दैट वी हैव पेड ऑल लाइबिलिटीज वेयर पेड ऑफ। नाउ हियर वी हैव गिवन 3 लाइबिलिटीज, हमारे पास 3 लाइबिलिटीज है। लोन फ्रॉम तुकाराम, सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, तीनों लाइबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। ओके, सो ये हमारा खर्चा होगा, सो दैट इफेक्ट वी विल शो इन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। So in realization account debit side, we will write to bank account. Okay, to बैंक अकाउंट। आप अगर पेमेंट करते हो तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाके लिखना है टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट इज लोन फ्रॉम तुकाराम, $10,000. Second, sundry creditors, $12,000. Bills payable 4,600. So total of payment of liability is 26,400. Okay, now we have paid or we have made payment of liabilities, हमने liability को paid किया है। Here we have recorded two bank accounts. So in bank account credit side we will write by realization account. By realization account amount is 26,400. Now next is the cost of realization was rupees 800. We have paid realization expenses of rupees 800. हमने क्या कर दिया, realization expenses को paid किया जिसकी cost है 800 rupees. Okay, so in realization account debit side once again we will write, आप payment कर रहे हो so we will write to bank account. To bank account, in bracket we will write realization expenses. Realization expenses 800 rupees.
Now second effect of payment of realization expenses we will show in bank account credit side. So in bank account credit side we will write by realization account 800 rupees. Okay. Now next adjustment is very important adjustment is there. राजाराम becomes bankrupt. राजाराम क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया. bankrupt means insolvent, कंगाल होना. And rupees 1100 was recovered from his estate. और उससे हमें कितना पैसा मिल रहा है इंसॉल्वेंसी के बाद? 1100. So ये पैसा राजाराम फर्म को दे रहा है इंसॉल्वेंसी के बाद. ओके. So we have received 1100 rupees from Rajaram. So पैसा आ रहा है बिजनेस में. Okay. So what journal entry we will pass? और journal entry will be, आप journal entry क्या पास करोगे रफ में? बैंक अकाउंट डेबिट. डेबिट what comes in? Okay, पैसा आ रहा है, so डेबिट कर दो 1100 rupees to Rajaram's capital account. Rajaram is a giver, so credit is Rajaram. 100 rupees. Okay. सो इंसॉल्वेंसी के बाद राजाराम ने फर्म को कितना पैसा दिया है? 1100 रुपया दिया है. सो फर्स्ट इफेक्ट वी विल शो इन बैंक अकाउंट डेबिट साइड, जिसका हमें पहला इफेक्ट कहाँ देना होगा? बैंक अकाउंट के डेबिट में देना होगा, क्योंकि पैसा आ रहा है तो डेबिट करो बैंक अकाउंट में जाके. हियर वी विल राइट टू राजाराम्स कैपिटल अकाउंट. टू राजाराम्स कैपिटल अकाउंट 1100. Now second effect we will show in Rajaram's capital account credit side और partners capital account credit side. राजाराम पार्टनर है, ओके, उसे हमने क्रेडिट किया है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे जाना है. और वहां जाके हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट. इन द कॉलम ऑफ राजाराम we will write 1100. Okay. Now here we have finished all adjustment. हमारी सब adjustment हो चुकी है. Okay. So we will close realization account first. Okay. हम क्या करेंगे? realization account को close करेंगे. Now here you can see total of debit side of realization account is greater than credit side. Okay. realization के debit side का total ज्यादा है. Okay. So it is 1,86,900. We will write in the side total of debit side of realization account is 1,89,600. Okay, and total of credit side of realization account is 1,32,600. 1,32,600. ओके. डेबिट का टोटल ज्यादा है, मतलब हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस ज्यादा है, इनकम एंड गेन्स कम है. ओके. सो वी विल गेट अ लॉस हियर. हमें लॉस होगा. सो लॉस ऑन रियलाइजेशन इज so total of debit side of realization account is 1,86,900. 1,86,900. रियलाइजेशन के डेबिट साइड का टोटल है 1,86,900. ओके. एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज 1,32,900. ये क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 1,32,900. सो देयर विल बी अ लॉस. डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है. ओके. सो लॉस कितना होगा? इट विल बी 54,000. ओके. सो दैट लॉस ऑफ रुपीज 54,000 विल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके. सो हियर वी विल राइट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. In bracket we will write loss. Okay. Loss on realization. Now there are three partners: Sitaram,
Gangaram and Rajaram. Loss is 54,000. Now ratio of Sitaram is 4/9. For Gangaram it is 2/9. And for Rajaram it is 3/9. So 24,000, 12,000 and 18,000 will be the loss which will be transferred to partner's capital account. Total of loss is 54,000. Okay. Total of realization account credit side is 1,86,900. Now that realization loss will be transferred to partner's capital account debit side. Okay. So in partner's capital account debit side we will write to realization account. $24,000, $12,000 and $18,000. Okay. Now we have closed realization account and we have transferred loss on realization to partner's capital account credit side. Now in the question of dissolution under insolvency, what we have to do, हमें क्या करना होगा, इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लोज करना है. ओके. एंड उसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, उसकी हमें कैपिटल डेफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है. ओके. सो हियर वी विल डू वर्किंग नोट to find out capital deficiency of insolvent partner Rajaram. You can see here Rajaram is an insolvent partner. Okay. So insolvent partner की हम क्या करेंगे, capital deficiency find out करेंगे. So our working note 1 will be capital deficiency of Rajaram. This is calculation for कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ राजाराम. नाउ राजाराम की हमें कैपिटल डेफिशिएंसी कैसे मिलेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ राजाराम्स कैपिटल अकाउंट. ओके. टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ राजाराम्स कैपिटल अकाउंट माइनस राजाराम के कैपिटल अकाउंट के डेबिट के टोटल से उसकी क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या करना है, लेस करना है. लेस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ राजाराम्स कैपिटल अकाउंट. ओके. राजाराम के कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल है 18,000 माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. यू कैन सी हियर टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 15,900. सो डेबिट साइड के टोटल से राजाराम की क्रेडिट साइड का टोटल लेस करो, यू विल गेट डेफिशिएंसी, कैपिटल डेफिशिएंसी. कैपिटल deficiency or we can say debit balance, capital deficiency of Rajaram, or you can say debit balance of insolvent partner Rajaram. So capital deficiency is 2,100. राजाराम की कैपिटल डेफिशिएंसी कितनी है, 2,100. उतना वो अमाउंट राजाराम फर्म को पे नहीं कर पा रहा है. ओके. So that capital deficiency of Rajaram will be shared by solvent partner Sitaram and Gangaram. राजाराम के कैपिटल डेफिशिएंसी का ये जो बैलेंस है 2,100 रुपीज, अब वो कौन पे करेंगे,
सॉल्वेंट पार्टनर पे करेंगे। हमारे पास दो सॉल्वेंट पार्टनर है, राजाराम इनसॉल्वेंट हुआ, so solvent partner will be Sitaram and Gangaram. Okay, so here we will write distribution of capital deficiency. Capital deficiency. This is working note number second. Distribution of capital deficiency between solvent partners who are solvent partners Sitaram and Gangaram. Sitaram and Gangaram in their profit sharing ratio. Now profit sharing ratio of Sitaram and Gangaram, their old ratio, तीनों का old ratio क्या था, 4:2:3. Okay, now Rajaram become insolvent, Rajaram insolvent हो गया है. Okay, so ratio will be, उनका रेशियो क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टनर जो दोनों है सीताराम और गंगाराम, उनका रेशियो क्या होगा, 4:2. इट मींस इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल, इट विल बी 2:1. ओके, आप 2 से डिवाइड करो 4 को तो वो हो जाएगा 2:1. ओके, सो हियर वी विल राइट फर्स्ट सॉल्वेंट पार्टनर इज सीताराम and second partner is Gangaram. Now capital deficiency of Rajaram is 2100. Okay, so 2100 capital deficiency है, वो दोनों पार्टनर में क्या करना है, हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दी रेशियो ऑफ 4/6 and 2/6. Okay, so we will do calculation here. 2100 into 4/6, it will be 1400 for Sitaram and 2100 into 2/6, it will be 700 for Gangaram. Okay, now you can see here राजाराम के डेबिट साइड का टोटल है 18,000 कैपिटल अकाउंट का, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे, ये ज्यादा वाला टोटल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ राजाराम कैपिटल अकाउंट. राजाराम इज ए इंस्टॉलमेंट पार्टनर, इट इज 18,000. ओके, नाउ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ राजाराम कैपिटल अकाउंट, ये कितना टोटल हुआ, 15,900. ओके, सो देयर इज शॉर्टेज और वी कैन से देयर इज कैपिटल डेफिशिएंसी of rupees 2,100 in credit side of Rajaram capital account. So ये दोनों कैपिटल डेफिशिएंसी जो है, ये जो कैपिटल डेफिशिएंसी जो है 2,100, ओके, वो सॉल्वेंट पार्टनर सीताराम और गंगाराम शेयर कर रहे हैं. ओके, सो हियर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड वी विल राइट बाय फर्स्ट पार्टनर इज सीताराम, बाय सीताराम्स कैपिटल अकाउंट सीताराम कितना लाया, 1400. So here we will write 1400 and by Gangaram's capital account 700. Okay, so राजाराम की जो डेफिशिएंसी थी, कैपिटल डेफिशिएंसी 2100, वो किसने फिलअप की है, सीताराम ने और गंगाराम ने की है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2 से. ओके, सो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ राजाराम कैपिटल अकाउंट इज नाउ 18,000. ओके, नाउ फर्स्ट इफेक्ट हमने कैपिटल डेफिशिएंसी का कहां पे शो किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो किया है, इंसॉल्वेंट पार्टनर के कॉलम के अंदर. नाउ सेकंड इफेक्ट ऑफ दैट sharing of capital deficiency we will show in partners capital account debit side. Okay,
So in partners capital account debit side, we will write to who is insolvent partner Rajaram. To Rajaram's capital account. To Rajaram's capital account. In the column of Gangaram, sorry, in the column of Sitaram, Sitaram ने कितना लाया 1400 and Gangaram has what 700. So Gangaram की column में आपको लिखना है 700 rupees. Okay, so this is how we have shown how capital deficiency is shared by solvent partner. Insolvent partner का capital deficiency किसने share किया है? Solvent partner ने share किया है जो है Sitaram and Gangaram. Okay, now we will close capital account of solvent partner who is Sitaram and Gangaram. Now you can see here दोनों पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है. ओके, सो we'll close Sitaram's capital account first. It is rupees 75,400. Now 75,400 minus 25,400. ये टोटल है 75,400. डेबिट साइड का टोटल है 25,400. So difference will be 50,000. Okay. So here we will write to bank account. So whatever difference we will get in partners capital account. Partners capital account में जो भी difference आएगा वो आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है. Okay. So here we will write 50,000 rupees for Sitaram. Total of debit side is 75,400. Now we will close Gangaram capital account. It is rupees 50,200. Now 50,200 is the total of credit side of Gangaram's capital account. Total of debit side is 12,700. Difference is 37,500. Okay, so here we will write 37,500. That amount will be also transferred to bank account. Okay, so here we will write to bank account. Okay, total of debit side is 50,200. Now both balances of Sitaram's capital account and Gangaram's capital account will be transferred to bank account credit side. Okay, so in bank account credit side we will write by Sitaram's capital account $50,000 and by Gangaram's capital account it is rupees 37,500. Okay, now we will close bank account. First we will close debit side, or we will make total of debit side of bank account. This 1,14,900. बैंक अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 1,14,900. Now we will do total of credit side of bank account.
we have done one mistake over here. Total of payment of liability is 26,600. ये टोटल था 26,600. Okay, by mistake we have recorded 26,400. So here we will do correction. Here we will write 26,600. Okay, now we will do total of credit side of bank account. It is rupees 1,14,900. So students, our bank account is tallied now. हमारा बैंक अकाउंट टैली हो रहा है. पहले क्या था कि बाय मिस्टेक हमने रियलाइजेशन अकाउंट बैंक अकाउंट की क्रेडिट में जो टोटल लिखा था 26,400 वो रॉन्ग था, जिसकी वजह से हमारा बैंक अकाउंट टैली नहीं हो रहा था. सो टुडे वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 8, page number 248, which is based on dissolution under insolvency situation. Okay, so try to solve this question and try to make your own practice. Okay, so that you will be in a position to solve such type of question properly in examination. Thank you, student. Thank you so much for watching my video.